नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। इसको चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ एवं वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि सभी लोगों तक जाए, सभी रिटायरी साथियों तक, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज तक, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज तक, पब्लिक एट लार्ज तक, और to mobilize and motivate our retiree friends। अच्छा, एक ये मैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की एक चिट्ठी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने लिखी है 24/1/2024 को, यानी कि आज, टू श्री ओम प्रकाश मिश्रा, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर HR, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई। CH वेंकटचलम के साइन है, जनरल सेक्रेटरी। इन्होंने लिखा है इनको ग्रेजुएटी के संबंध में, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी टू अर्स्टवाइल इंपीरियल बैंक एम्प्लॉय, जो इंपीरियल बैंक के एम्प्लॉय थे उनके लिए लिखा है इन्होंने। यू विल बी अवेयर दैट प्रायर टू इंपीरियल बैंक बिकमिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम जुलाई 1955 द एम्प्लॉयज हु वर वर्किंग इन Imperial Bank were being extended pension, CPF and gratuity. I may be observed that in 1947-48 the Divitya award awarded 1 month gratuity with some ceiling for employees of Imperial Bank of India. This award was applicable in Bombay and Ahmedabad. Similarly, the Gupta award also gave the award that employees of Imperial Bank are eligible for gratuity without any ceiling, and this applicable to Bengal Circle. This was made applicable to all over India except Bombay and Ahmedabad, but Labour Appellate Tribunal LAT award in 1954 removed this restriction, and this was duly incorporated in Industrial Dispute Banking Companies Decision Act 1955। ये इम्पोर्टेंट लेटर है, इसका नंबर भी नोट कर लो, AIBEEA GS 2024/009 और 24/1/2024 ये है। This was duly protected under Section 7 of the SBI Act 1955, which provided that all erstwhile employees of Imperial Bank of India will be entitled to all their benefits including pension and gratuity. Thus, employees of erstwhile Imperial Bank were eligible for the above benefits in SBI. But employees who joined SBI after July 1955 were made eligible for PF and pension. You are aware that in August 1972 the Payment of Gratuity Act came into being, and since then, after litigation by our union, SBI employees are covered by pension, PF and gratuity under Gratuity Act. But erstwhile Imperial Bank employees were eligible for gratuity as per the scheme in vogue in Imperial Bank. Hence, in terms of Gratuity Act, these erstwhile employees of Imperial Bank were eligible for gratuity under the Act or scheme, whichever was higher. However, SBI management took the decision that after July 1955, employees are entitled only PF and pension, and from 1972 for gratuity under the Act. In view of this,
Employees of erstwhile Imperial Bank of India who retired before August 72 were not paid gratuity, and employees who retired after 72 were paid gratuity only under the Act. Aggrieved by this decision of SBI, the affected employees took up the issue before appropriate authorities of the Labour Ministry and got an order for receiving gratuity under the Act for a scheme whichever was higher. This was challenged by the bank before High Court of Madras, and in 2016 High Court upheld the decision of the RLC Labour Authority. Unfortunately, this decision in the writ appeal 3037 of 2002 by V.S. Ekambram and others was not accepted by SBI, and the management of SBI challenged this decision before the Supreme Court. We are happy to learn that petition filed by SBI before the Honorable Supreme Court has been disallowed, and the SLP has been dismissed vide their order dated 18th January 24. It is very unfortunate that because of delay all the petitioners are no more today with us. However, their legal heirs are alive. They are eligible to receive the difference in gratuity between the entitlement under the scheme and the amount paid under the Act. We urge, hope and trust that the eligible amount payable to the legal heirs will be disbursed at an earliest. Thanking you, C.H. वेंकटचलम, योर सिंसियरली जनरल सेक्रेटरी। तो ये है कहानी। अब ये न्याय व्यवस्था में इनको इतना पुराना केस था ये, और ग्रेजुएटी इन्हें मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, और अब ये जितने भी हकदार थे वो सब बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, यानी कि स्वर्ग से धार गए हैं। और अब ये डिसीजन आया है 18 जनवरी 2024 में, और ये इन्होंने कितने दिनों से लड़ रहे थे केस को, और 1954 के अवार्ड का हवाला है इसमें, 47-48 का हवाला है, जुलाई 55 का हवाला है। तो ये स्थिति है, मतलब सीनियर सिटीजन्स के मरने के बाद उन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, और ये मिल गया लेकिन पैरवी ना करने की वजह से नहीं भी मिलता। ये दारुण अवस्था है, दुख भरी कहानी है रिटायरीज की। तो ये आप देख लें, आपके सम्मुख है सब कुछ, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। नमस्कार साथियों। लेकिन रिटायरीज को गवर्नमेंट भी देखे और कोर्ट भी देखें कि उन्हें न्याय समय पे मिलना चाहिए। वो तो चले जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे, तो न्याय का ऐसे न्याय का जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइंग